Angiotensin converting enzyme inhibitors. ACE inhibitors or angiotensin converting enzyme inhibitors are frequently used as first line antihypertensive drugs. ACE inhibitors are frequently used as first line antihypertensive drugs. Mechanism: ACE inhibitors inhibit the generation of angiotensin 2. ACE inhibitors के कारण angiotensin 2 रिलीज ही नहीं होगा, which will result in dilation of arterioles. This will decrease the peripheral vascular resistance and ultimately lead to decrease in BP. Dilation of arterioles will decrease peripheral vascular resistance, which will lead to decrease in BP. Decrease in aldosterone production, which will decrease sodium and water retention and lead to decrease in BP. Decrease in aldosterone production, which will lead to decrease in sodium and water retention, and finally decrease in BP. Decrease in sympathetic nervous system activity. Decrease in sympathetic nervous system activity. So the activity of sympathetic nervous system will also decrease. There will be decrease in the sympathetic nervous system activity. It inhibits degradation of bradykinin by ACE. So ACE, angiotensin converters enzyme, it degrades bradykinin. So angiotensin converters enzyme inhibitor will inhibit the degradation of bradykinin. Bradykinin is a potent vasodilator. Bradykinin is a potent vasodilator. ACE inhibitors will inhibit its degradation. ठीक है, तो अगर ब्रैडिकाइनिन डिग्रेड नहीं होगा, then there will be potent vasodilation. Third mechanism of action, stimulate synthesis of vasodilating prostaglandins through bradykinin. और ब्रैडिकाइनिन के कारण ब्रैडिकाइनिन से vasodilating prostaglandins synthesize होंगे. All these actions contribute to antihypertensive effect. They also reverse ventricular and vascular hypertrophy. तो एक तो बीपी कम हो रहा है और दूसरा it reverses ventricular and vascular hypertrophy. ACE inhibitors also reverse ventricular and vascular hypertrophy. Pharmacokinetics. ACE inhibitors are usually given orally. In hypertensive emergency, enalaprilate can be given intravenously. ACE inhibitors usually given orally. In case of hypertensive emergency, enalaprilate can be given intravenously. Food reduces the absorption of captopril. Hence, it should be given 1 hour before meals. Should be given 1 hour before meals. ACE inhibitors poorly cross the blood-brain barrier, metabolized in liver, excreted in urine. Mostly given orally. In case of hypertensive emergency, enalaprilate is given intravenously. Route of administration हो गया. Then absorption से related, food reduces the absorption of captopril. Hence, it should be given 1 hour before meals. ACE inhibitors poorly cross blood-brain barrier, metabolized in liver, excreted in urine. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. ACE enzyme converts angiotensin 1 to angiotensin 2. ACE inhibitors will inhibit ACE enzyme and angiotensin 2 will not be produced. ठीक है, angiotensin 2 क्या करता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेसल के कारण पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा. एल्डोस्टेरॉन रिलीज के कारण सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है और इनके कारण बीपी इंक्रीज होगा. पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, सोडियम वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो बीपी इंक्रीज होगा. It activates sympathetic activity. It leads to increase in sympathetic activity, and it also causes cardiac hypertrophy and remodeling. Angiotensin 2 क्या क्या करवाता है?
ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, जिसके कारण टोटल पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज के कारण सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा। पेरिफेरल रेसिस्टेंस के इंक्रीज और सोडियम वाटर के रिटेंशन के कारण बीपी इंक्रीज होता है। ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी और रीमॉडलिंग भी करवाता है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी और रीमॉडलिंग करवाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। तो अगर हम एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर दें तो ये सारे अगर हम एस इनहिबिटर्स को एस एंजाइम को इनहिबिट कर दें बाय यूजिंग एस इनहिबिटर्स, तो एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस ही नहीं होगा और ये सारे एक्शन होंगे ही नहीं। तो बीपी घट जाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, and it also reverses ventricular and vascular hypertrophy. एडवर्स इफेक्ट का निमोनिक है कैप्टोप्रिल। ठीक है, सी से कफ, ए से एंजियोइडमा, पी से प्रोटीन यूरिया, टी से टेराटोजेनिक इफेक्ट, ओ से हाइपोटेंशन, प्रिल से न्यूट्रोपीनिया इज रेयर, then rashes, itching, and loss of taste sensation and hyperkalemia. So the mnemonic is captopril. C से cough or dry cough. Bradykinin is metabolized by ACE. Inhibition of ACE results in increased bradykinin levels in the lungs and causes cough. ठीक है, तो C से cough हो रहा है because of increase in bradykinin levels. Appearance of intractable cough is an indication to stop the drug. It, it subsides following discontinuation of the drug. A से angioedema, swelling in nose, lips, mouth, throat, larynx, glottis. There can be airway obstruction. Patient's airway should be protected. If required, adrenaline and glucocorticoid antihistaminics should be administered. So angioedema को treat करने के लिए we can give adrenaline, glucocorticoids और antihistaminics. ठीक है, because angioedema मतलब nose, lips, mouth, throat, larynx, glottis का swelling हो रहा है. ठीक है, airway obstruction भी हो सकता है. So patient's airway should be protected. Proteinuria can occur rarely. This drug should be discontinued. अगर proteinuria हो रहा है then the drug should be discontinued. T से teratogenic effect. It causes growth retardation, fetal hypotension, renal failure, neonatal death, and hence contraindicated in pregnancy. O से hypotension. फर्स्ट डोज के बाद हाइपोटेंशन हो सकता है. दिस कैन बी मार्क्ड इन पेशेंट्स who are volume depleted or have congestive heart failure. Okay, then prill. Neutropenia, R से rashes, I से itching, L से loss of taste sensation, that is dysgeusia, and then hyperkalemia. In patients receiving ACE inhibitors, hyperkalemia may occur in the presence of renal insufficiency or when they are combined with potassium sparing diuretics. So the mnemonic for the adverse effect of ACE inhibitors is captopril plus hyperkalemia. Let's see the contraindication. ACE inhibitors are contraindicated in patients with bilateral renal artery stenosis, as acute renal failure can be precipitated. Okay, so they are contraindicated in bilateral renal artery stenosis. When renal perfusion pressure is low, angiotensin 2 maintains the glomerular filtration rate by constricting the afferent arterioles, and this mechanism of angiotensin 2 will be blocked by ACE inhibitors. So they are contraindicated in patients with bilateral renal artery stenosis. ACE inhibitors are also contraindicated in patients with single kidney with renal artery stenosis, as they can precipitate renal failure. Contraindicated in patients with single kidney with renal artery stenosis, bilateral renal artery stenosis, or single kidney with renal artery stenosis.
सी बाइलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में इफेरेंट आर्टेरियोलर प्रेशर कम हो जाता है। बाइलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में इफेरेंट आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण जीएफआर कम हो जाता है। ये बाइलैटरल आर्टेरियोलर प्रेशर के डिक्रीज के कारण एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट होगा। इट विल कॉज इंक्रीज इन इफेरेंट आर्टेरियोलर प्रेशर, जिसके कारण जीएफआर मेंटेन होता है। ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन टू है, ये एस इनहिबिटर्स से इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण इफेरेंट आर्टेरियोलर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा और जीएफआर मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बाइलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल in maintaining the GFR by increasing the efferent arteriolar pressure, बट एस इनहिबिटर्स के कारण अगर एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो जीएफआर मेंटेन नहीं होगा। ड्रग इंटरैक्शन, एस इनहिबिटर्स if are used with potassium sparing diuretics, it will result in hyperkalemia, dangerous hyperkalemia. Simultaneous administration of ACE inhibitors and potassium sparing diuretics can cause dangerous hyperkalemia. ACE inhibitors ex lithium. ACE inhibitors retard renal elimination of lithium and potentiates its toxicity. तो एस इनहिबिटर्स के कारण लिथियम का एलिमिनेशन कम होगा और उसका टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगा। एस इनहिबिटर्स एक्स एनसेट्स, एनसेट्स by inhibiting prostaglandin synthesis promote Na plus and water retention on chronic use। ठीक है, एनसेट्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्रॉनिक यूज़ पे Na+ और वाटर का रिटेंशन प्रमोट होगा। तो एनसेट्स के क्रॉनिक यूज़ के कारण Na+ और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, तो इसके कारण दे विल डिक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स। थायाजाइड्स एक्स एस इनहिबिटर्स, diuretics increase the hypertensive effect of ACE inhibitors by promoting the loss of Na+ and water. Serum potassium levels are maintained by the combination of thiazides and ACE inhibitors. Therapeutic uses of ACE inhibitors: hypertension, acute MI, CHF, diabetic nephropathy, scleroderma, renal crisis। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं हार्ट से रिलेटेड: हाइपरटेंशन, अक्यूट एमआई, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी और स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। 2 चीज़ नेफ्रॉन से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है: डायबिटिक नेफ्रोपैथी, स्क्लेरोडर्मा, रीनल क्राइसिस। ठीक है, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, scleroderma, renal crisis। Hypertension, ACE inhibitors are used in all grades of hypertension. They decrease cardiovascular and cerebrovascular morbidity and mortality। Okay. Fatal and non-fatal stroke, they do not cause electrolyte disturbances, hyperuricemia, alteration in lipid levels and sexual dysfunction. They are preferred in hypertension। Okay. इनके कारण इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, हाइपरयूरिसीमिया, लिपिड लेवल्स में ऑल्टरेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता है। दे आर प्रिफर्ड इन हाइपरटेंशन। पेशेंट्स विथ डायबिटीज़, बिकॉज दे डिले और प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ रीनल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, these are preferred in hypertensive patient with diabetes। They are also preferred in hypertensives with coexisting congestive heart failure, left ventricular hypertrophy, and peripheral vascular disease। So it is preferred in hypertensive with diabetes or coexisting congestive heart failure, left ventricular failure, or peripheral vascular disease। Acute MI, ACE inhibitor should be started within 24 hours in patients with MI. They have shown both short-term and long-term improvement in survival and decrease in reinfection। ACE inhibitor should be prescribed to all patients with
impaired left ventricular function. ACE inhibitors and angiotensin II receptor blockers are the preferred drug in diabetic nephropathy in hypertensive patients as well as normotensive patients. They decrease systemic blood pressure and dilate the renal efferent arterioles. Decrease in intraglomerular pressure inhibit angiotensin II mediated mesangial cell growth. They decrease microalbuminuria. Scleroderma renal crisis. ACE inhibitors prevent the effect of angiotensin II in the renal artery. Thus, they are effective in the treatment of scleroderma renal crisis. Survival rate is increased. Therapeutic uses are hypertension, hypertensive patients with diabetes, CHF, left ventricular hypertrophy, peripheral vascular disease, in acute MI, in congestive cardiac failure, diabetic nephropathy, and scleroderma renal crisis.